सिलेक्ट किया, आप मैदान में खेलेंगे और वो आपके मार्कशीट में आएगा अगर उधर अच्छा करेंगे तो। और मार्कशीट में आएगा तो मुझे लगता है पेरेंट्स का कोई उसको अपोजिशन को मार्क्स मिलेंगे, उसके आपको क्रेडिट मिलेगा। ये थोड़ी सिस्टम चेंज हो गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। तो ये सब भी धीरे धीरे आपके सन और डॉटर को हम उसके बारे में पता दे देंगे। आज पहले दिन हम बम्बार्डिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जो बच्चे 12वीं करके आते हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताएंगे तो डर जाएंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर फॉर नेक्स्ट 3 or 5 years। ऐसे नहीं कि डे 1 में थोड़ा डर बैठे कि क्या होने वाला है, बट मेन थिंग इज यू विल हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज टू डू। और इसके लिए हमने क्या किया है इस बार, एक थोड़ा नया, मैंने बोला ना कि 25th ईयर है हमारा, तो हम थोड़ा हटके कुछ करना चाहते हैं। तो आज हमने यहाँ पे एक अपने VSIT की बिल्डिंग में एग्जीबिशन रखा हुआ है। देखेंगे उसमें हमारे करंट बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें कोई एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोडक्ट्स हैं उनके, उसका डिस्प्ले किया हुआ है। आपके टीचर्स हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, वो टीचर्स कौन है, कैसा है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो उन्होंने हमने टीचर्स का जो अचीवमेंट है उसका एक कॉर्नर वहाँ पे बनाया हुआ है। हम लोग अभी नेशन फर्स्ट, ये एक हमारा we want the students to know that always nation is first। उसके बाद हम हमारी आइडियाज, हमारा सेल्फ उसके बाद आता है। Once we accept that nation first, automatically nation जैसे डेवलप होता है, we also get developed। इसलिए नेशन फर्स्ट ये हमारा एक काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। इंडियन नॉलेज सिस्टम ये NEP के अंडर, नेशनल पॉलिसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज बनाई गई है। एवरीबडी ऑफ यू आर गोइंग टू हैव अ पेपर रिलेटेड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। आइडिया ये है कि अपना देश क्या है, व्हाट इज देयर इन इंडिया, पर्टिकुलरली प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ करता है। तो ये एक यहाँ पे आए हुए हैं और हम सोचते हैं कि ये जो इंडियन चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सबके सामने आ जाए। इसलिए हम लोगों ने एक IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम बनाना चाहते हैं। तो वो भी एक एग्जीबिशन लगाया हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में है कि एवरी टाइम VSIT will be full with activities, will be full with exhibits, will be full with everything that students want to do। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आप डेवलप करो, नया इंटरेस्ट, और अगर आपका ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं। So from that point of view, please go through the exhibition। ये जो पूरा आइडिया यहाँ पे हुआ है, ये अरेंजमेंट जो सब हुए हैं, टीचर्स तो उसके पीछे है ही, लेकिन I would also say that the students, current students who are now in SY and TY, अभी एक्चुअली उनका वेकेशन है, उनके लेक्चर्स 15 तारीख से मंडे से शुरू होने वाले हैं। बट ऐसे बच्चे हैं कि उनको घर में बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। They are coming here helping us for last 2 to 3 weeks in getting all these things done। तो आप देखे होंगे जहाँ जहाँ चल के आ रहे हैं हर जगह पे एक वॉलेंटियर है, volunteer है, they themselves have come here and next 2 days today and tomorrow they will guide everyone of you new entrants on the campus in this। Next year some of you will be part of that team, volunteers team। तो इस तरह से काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। पेरेंट्स को पर्टिकुलरली मैं ये कहना बताना चाहूँगी कि जो सिस्टम है उसमें एक फाइनल एग्जाम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी है कि बच्चों को उनका प्रेशर कम होना चाहिए। एक ही एग्जाम है लास्ट और उसी एग्जाम में कुछ भी आपका थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपके रिजल्ट में एकदम इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। द एक्टिविटी शुड बी कंटिन्यूअस and therefore they should be in college continuously। कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, ग्राउंड वगैरह देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो आई थिंक कॉलेज में आपको आना है, एवरी डे कॉलेज में आना है, एवरी डे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। क्लासरूम आर आल्सो वेरी नाइस, टीचर्स आर आल्सो वेरी नाइस, वेरी अपडेटेड अप टू डेट टेक्नोलॉजी, नाम में ही टेक्नोलॉजी है तो एवरीवेयर देयर विल बी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। You should take the fullest possible benefit of that।
आपका अटेंडेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। मोबाइल पे अटेंडेंस होने वाला है, और ये जो मोबाइल पे ऐप है, दैट ऐप इज आल्सो एक्सेसिबल टू द पेरेंट्स। आई डोंट वांट दैट पेरेंट्स भी लोग बड़े हो गए, पेरेंट्स ने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट पेरेंट्स शुड हैव अ कॉन्फिडेंस दैट आप यहाँ पे आके अच्छे से सब अटेंड कर रहे हो। इसके बाद तो आपको खेलना है तो खेलने के लिए जा सकते हो, कुछ एक्टिविटी करनी है वो कर सकते हो। सो यू हैव एम्पल ऑफ प्लेस, टाइम, एवरीथिंग प्लान्ड ओवर हियर। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिसिप्लिन इज परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस टाइम का लेक्चर है 5 मिनट पहले आके आपको बैठना है। अगर ये हैबिट आप अभी से करना चालू करोगे, तो जब आप ग्रेजुएशन होने के बाद यू गो फॉर अ जॉब, then you will automatically follow the rules over there। वहाँ पे तो rules follow ही करने हैं। If we make following the rule as our habit, rather than somebody telling you, security telling you, I card पहनो, security telling you, चलो क्लास में जाओ, फिर गुस्सा आता है, वो क्यों मेरे को बता रहा है। But if I myself follow this, then nobody is there to watch you or guide, dictate you। इसलिए ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है, धीरे-धीरे हम आपको बताएंगे। और पेरेंट्स का यहाँ पे हमारे कॉलेज में आना हमको हमेशा अच्छा लगता है। देयर आर मेनी प्रोग्राम्स, चैनल वगैरह है जो जिसके बारे में आपको सब बताएंगे। चैनल पे आपको पता चलता रहेगा कि कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप किसी भी प्रोग्राम को आप आ सकते हो। Open, most of the programs are here, bigger programs are here on the auditorium इतना बड़ा है, तो हमको हमेशा अच्छा लगेगा कि ऑडियंस बन के आप आ जाए। आपके कोई सजेशंस है वो आप देते रहे, so keep rapport with us। Parents are not here just when the son or a daughter doesn't behave well और उनको बुलाया जाता है, ऐसे कोई नहीं है यहाँ पे। पेरेंट्स हमेशा हमको चाहिए, so that मैंने जैसे पहले बोला कि हमारी फैमिलियों को बड़ी बढ़ती जानी चाहिए, विद्यालंकार फैमिली, VSIT family। So from that point of view, I once again welcome all of you on this campus, Vidyalankar complex of educational institutes, and I'm sure we will, you must have taken admission here with some objective in your mind, and I'm sure your objective will be fulfilled over the next 3 years। Thank you। Beautifully reflected the values, vision and culture of VSIT. Talking about the infrastructure of VSIT, we take great pride in the robust infrastructure on campus that made the academic life of students exciting and enriching. Our campus features spacious, well-ventilated classrooms equipped with modern teaching aids that make learning interactive and engaging. Well-equipped computer laboratories provide students with access to the latest softwares and technologies, enabling them to gain practical exposure alongside theoretical knowledge. Beyond academics, the campus offers seminar halls, collaborative learning spaces, and recreational areas that encourage creativity, teamwork, and innovation. Every facility has been thoughtfully designed to create an environment where students can learn, explore, and grow with confidence. The campus is fully ICT enabled, providing students with access to smart classrooms, high-speed internet connectivity, and digital learning platforms. A live lecture capture system allows students to revisit classroom sessions whenever needed, making learning more flexible and accessible. Students also have access to digital notes, online study resources, e-books, academic portals, and learning management systems that support continuous learning beyond regular class hours. This seamless integration of technology ensures that every student remains connected, informed, and prepared for the digital future. At VSIT, we believe that student success is built on a foundation of academic support, personal well-being, and nurturing campus environment.
Students have access to dedicated reading rooms and collaborative spaces where they can study individually or work together on projects. Comfortable common areas provide opportunities to relax, interact, and build lasting friendships. The institution also offers counseling and mental health support, recognizing that emotional well-being is just as important as academic achievement. Medical assistance is readily available on emergencies, while faculty mentors and administrative staff are always approachable to guide students through their academic journey. Our goal is to ensure that every student feels supported, valued, and empowered to make the most of their college experience, both inside and outside the classroom. Before you begin your journey with us, we invite you to experience the institution that will soon become your second home. Let's now watch a short video that captures the essence of VSIT. Vidyalankar School of Information Technology offers a well-equipped and thoughtfully designed academic environment. The campus features modern, air-conditioned classrooms and advanced computer laboratories that support practical learning. A dedicated media lab studio with professional camera and lighting facilities enables hands-on creative experience. Students have access to a range of sports facilities, including cricket nets, a football ground along with a gaming zone for recreation. The campus also includes a spacious canteen and a well-maintained library with a quiet reading room for focused study. Cultural events and student committees contribute to an active and engaging campus life. The institution maintains collaborations with various companies, supporting student placement opportunities across different sectors. VSIT provides an environment that supports learning, development, and professional growth. As you have just witnessed the journey and spirit of VSIT, let us now gain the deeper understanding of the department that will be your academic home for the next few years. It's my pleasure to invite Mrs. Seema Murkar, Deputy Coordinator of BSc Information Technology Program, calm in her approach, dedicated in her actions, and always ready to support students with a reassuring smile. Thank you, Kanchan, for my introduction. Good morning, everyone. As it is often said, every expert was once a beginner. Today, each one of you begins a new chapter in your academic journey, a journey of learning, growth, and discovery. I, Seema Murkar, Deputy Coordinator of BSc Information Technology, I, Seema Murkar, Deputy Coordinator of BSc Information Technology Program, welcome you to the Department of Computing. At our department, we are committed to building strong technical foundations while equipping students with industry-relevant skills, practical exposure, and opportunities for holistic development. As you embark on this exciting journey, let us explore the opportunities that await you at the Department of Computing. Our journey began in 2002 with the launch of BSc Information Technology with an intake of 60 students. Over the years, the program expanded steadily, reaching its current intake of 300 students. We also introduced MSc in Information Technology and later BSc Data Science, reflecting our commitment to evolving industry needs. 2026 marks a significant milestone for the Department of Computing. We have launched two new undergraduate programs, BSc Computer Science, Artificial Intelligence and Machine Learning, BSc Computer Science Software Engineering.
along with two postgraduate programs, MSc Data Science and Artificial Intelligence, and MSc Computer Science, Cyber Security. From a single program in 2002 to multiple future-ready programs today, our department continues to grow, innovate, and shape tomorrow's technologies. And now, you are part of our journey. Let me introduce the team that will be guiding you throughout your VSIT journey. Dr. Asif Wadala, Vice Principal and Head of the Department, whose vision and leadership inspire continuous growth and excellence of the department. Dr. Pushpa Mahapatro, VSIT Coordinator, overseeing the academic and administrative activities of the program. Myself, Seema Murkar, and I look forward to supporting you throughout your academic journey. Your class teachers will be your first point of contact for academic guidance and support. For Division A, we have Mr. Rahul Sonar, for Division B, Prabal Das, and for Division C, Ms. Seema Vishwakarma. Now let's understand how your academic year is structured. The VSIT program follows a semester pattern, with two semesters in each academic year. Each semester spans 14 weeks, providing sufficient time for both conceptual learning and practical applications. A typical lecture session is of 1 hour and practical session is of 2 hours. Let's now talk about the evaluation for VSIT program. Each theory course carries 100 marks with 50 marks for continuous internal assessment and 50 marks for end semester examination. So, continuous internal assessment includes your midterm exams, quizzes, presentations, assignments, online certification and attendance. And your practical component carries 50 marks. Out of that, 25 marks is again the internal assessment, where you will be assessed during the regular practical sessions and your mini projects. And remaining 25 marks is actual the practical exam which is conducted at the end of the semester. Also, the last point to be noted is the program follows combined passing. That means your internal in theory and practical both will be combined to get you achieve the final grade in your end semester examinations. Now here you may have noticed students that if you will see the slide, आपको ऐसे लग रहा रहेगा कि attendance के लिए वहाँ का उसमें फिर आपको कम marks आ सकते हैं. So the direct, if you will see the direct impact of attendance is only 5 marks, but indirectly it is affecting internal assessment, which carries 50% of your theory component. If you will see over there, and 50% of your practical component. That means automatically out of 150, 75 marks जो आपके हैं वो आपके internal से आ रहे हैं. Okay? So just conclude this slide is with attend classes regularly, participate actively, and submit your assignments on time, and that is the key to academic success. Now let's talk about your VSIT subjects here. Which is as per the National Education Policy. So talking about the core subjects which you have here is your Introduction to Programming, Discrete Mathematics and Web Programming, and we have communication skills also in English that comes under your ability enhancement course. Other than that, Principal Ma'am has already told you about the National Education Policy. So under that we cover some interdisciplinary subjects like environmental management and sustainable development, entrepreneurship skills or management skills, Indian knowledge systems and physical fitness, which covers your sports, cultural activities and your NSS. Now it's time to meet your faculty. So I request the faculty members who is teaching Introduction to Programming to please come on the stage.
So we have Dr. Asif Rampurawala, Vice Principal and Head of the Department of Computing, who holds PhD degree in Computer Science, having 22 years of teaching experience, and his area of expertise programming, data science and networking. Then we have Dr. Pushpa Mahapatro, VSIT coordinator, holds PhD degree in Computer Science, 23 years of teaching experience. Her area of expertise is programming, data analytics and project management. Then we have Dr. Geeta Sahu. She holds PhD degree in Computer Science, 17 years of teaching experience. Her area of expertise includes programming, networking and securities. And Dr. Swapna Kadam, who holds PhD in Information Technology, having 12 years of teaching experience. Her area of expertise includes database, programming and software testing. Thank you. Next, I request web programming faculty to come on the stage. Myself, Seema Murgal, VSIT Deputy Coordinator. I hold Master's degree in Computer Science, having 16 years of teaching experience, and my area of expertise is programming, web development and machine learning. Along with me, Ashwini ma'am, Ms. Ashwini Koinde is here. She is MSc in Information Technology, teaching experience of 17 years. And her expertise, area of expertise is programming, database and web development. And also we have Seema Vishwakarma ma'am. She holds MSc in Computer Science, teaching experience of 14 years. Her area of expertise includes programming, web development and machine learning. Thank you ma'am. Now I call upon discrete mathematics teachers. Just to note here from the last slide, Ms. Seema Vishwakarma will be the class teacher of Division C. We have Mr. Prabal Das. He is a Master of Engineering in Electronics and Telecommunication, having 9 years of teaching experience. And his area of expertise includes mathematics, statistics and electronics. And he will be the class teacher of Division B. Then we have Rahul Sunar, who is Master in Mathematics, having 9 years of teaching experience, and his area of expertise includes mathematics and statistics, and he will be the class teacher of Division B, Division A, sorry. So Division A we have Rahul Sonar sir, Division B Prabal Das, and Division C we have Seema Vishwakarma. अब यहाँ बैठे कुछ पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड मिनी प्रोजेक्ट्स के बीच में क्या मेरा बेटा या बेटी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को कंफर्टेबली मैनेज कर पाएगा? अगर उसे एक्स्ट्रा गाइडेंस की आवश्यकता हुई तो लेक्चर्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. College life is not just about attending lectures and exams. It is about discovering your interests, developing new skills and building lifelong connections. At VSIT, students can be a part of various clubs such as Tech Vista, our department Tech Club, E-Cell, Media Club, Marathi Vangmay Mandal, Student Council, Enactus, Management Club and many more. These clubs provide opportunities to learn beyond the classroom, network with peers, develop leadership qualities and create memorable college experience. On this note, now I call upon Dr. Pushpa Mahapatro to continue ahead with the presentation. Good morning everyone. I am Dr. Pushpa Mahapatro, Program Coordinator of VSIT. So strong foundation today means a successful career tomorrow. At Vidyalankar, learning goes beyond textbooks. Through bridge courses, workshops, we strengthen the fundamentals and we ensure a smooth transition of the student academics. Our guest lectures
hands-on workshop, expert lecture series bring students with the industry experts, and we ensure that the latest technologies are learned by the students. Add-on courses to enhance employability and industry readiness. We offer a variety of add-on courses in the emerging domains such as cloud computing, data science, AI, business analytics, cyber security, AR, VR, and many more. These courses help students to gain practical skills, industry certifications, and competitive edge beyond the regular curriculum. क्योंकि resume में सिर्फ marks नहीं, skills भी matter करता है. Industrial visits. So learning doesn't happen only inside the classroom. Sometimes the best lessons are learned when we step out to industrial visits and our international immersion program in UAE. Students get an opportunity to experience real-world business operations and industry practices. Visits to organizations such as Flipkart, Mahindra, All India Radio, National Stock Exchange, Imperative Business Venture help bridge the gap between the industry and the academia. So in short, हम बोल सकते हैं books हमें बताती है कि क्या होता है, but industry visits हमें बताते हैं कि कैसे होता है. Now we are talking about the technical events. So technical events provide our students with a platform to learn, compete, innovate, and showcase their talents beyond academics. Through initiatives such as Conclave, Tantra Vihar, Smart India Hackathon, Tech Vista, students get an opportunity to develop technical skills, teamwork, problem-solving abilities, and industry exposure. So it means यहाँ सिर्फ attendance नहीं, ideas को भी marks मिलते हैं. कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेडल कुछ शोर मचाए. So our students continue to excel in academics as well. So we are proud to highlight Aniket Bambre, the topper of 2025 batch, who secured O grade and was awarded silver medal for the outstanding performance. Now students' achievements in co-curriculum as well. Our students actively participate in various inter-collegiate competitions, hackathons, technical events throughout the year. Their achievement at various events reflect their creativity, technical skills, and team spirit. मतलब हमारे students सिर्फ attendance नहीं बल्कि competitions को भी hack कर देते हैं. Now talking about extracurricular activities, जहाँ competitions मतलब वहाँ विद्यालंकार के students. Our students are equally active outside the classrooms and have made the Department of Computing proud through their outstanding performance in cultural, sports, and extracurricular activities. Their achievement have contributed significantly to winning prestigious Best College trophies at institutions such as Hinduja College, Nanukar College, Navneet College, and many more, as you can see the glimpses on the slide. Distinguished alumni, आज आप ऑडियंस में बैठे हैं, क्या पता कल आपका फोटो यहाँ पे स्लाइड पे हो. So our alumni are true reflection of the opportunities and growth that begin at Vidyalankar. From successful corporate leaders to renowned content creators, artists, our graduates have made us proud in diverse fields. Whether it's Yash Karakia, founder and CEO of Shalom, Rachi Prasad, a leading Marathi actress, Naveen Reddy, YouTuber with 2 million followers, Aniket Singh, Executive Vice President at March India. Their journey continues to inspire our students.
Now, talking about placements, so parents का सपना, students की मेहनत और placement हमारा commitment. One of the key goal of our department is to make the student industry ready and career oriented through aptitude training, technical skills development, mock interviews, resume building sessions, and industry interactions. We prepare students for successful career. We are proud that our students have secured opportunities in reputed organizations. As you can see the logos on the slide, these organizations are Capgemini, So this is the inductions for Division C, and classroom is also mentioned M508. Now I invite Dr. Wadala sir to continue with the presentation. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, Maya, Bibi. Good morning. Good morning. All right. One of the important things, there is a lot of things which we have to tell you, a lot of things we want to show you. We're all excited, as you can see. Having a new batch is always fun. So my name is Asif from Wadala, and I'm the vice principal of. On time is late. Okay. You have to be before time if you want to be on time. Before time if you want to be on time. Okay. 12:30 बजे कोई नहीं पहुंचा. Okay. 12:30 बजे कोई नहीं पहुंचा. By the time you reach 12:30 बजे यहाँ पे इस बिल्डिंग में आपका लेक्चर 5th फ्लोर पे है. लिफ्ट में लाइन लग जाएगी. Okay, so in the same building on the 5th floor, जैसे आपके रूम नंबर्स बताए गए, your classrooms are, जैसे आपके रूम नंबर्स बताए गए, your classrooms are there. Okay, so are there. Okay, so you have to be on time. That means you have to be before. You have to be on time. That means you have to be before. That's first. Alright, that's first. Alright. Secondly, बहुत सारी चीजें इस कॉलेज में अवेलेबल है. ओके. एवरी एस्पेक्ट, जैसे आपने देखा बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें आप लोगों को नोटिस में आई होगी बिकॉज आपके इंटरेस्ट उस एरियाज में होंगे. हर किसी ने सब कुछ नोट नहीं किया है, मुझे पता है. हर किसी ने वही चीज नोट की है जो उसके इंटरेस्ट की है. किसी ने PS5 देखा होगा, किसी ने पूल टेबल देखा होगा, किसी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड देखा होगा, किसी ने लाइब्रेरी देखी होगी, किसी ने लैब्स देखे होंगे, किसी ने 3D प्रिंटर देखा होगा. था वो सब भी. जस्ट ट्राइंग टू सी. पेरेंट्स ने शायद कंपनीज के नाम देखे होंगे, क्योंकि बच्चों ने वो सब भूल गए. बच्चों के लिए भी वो दूर है. पेरेंट्स के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है कि बाबा बच्चे को हमने कॉलेज में डाला है, नौकरी मिलेगी कि नहीं, कहाँ मिलने वाली है, क्या है, सब कुछ. ऑल ऑफ दैट इज देयर. डोंट वरी, एवरी पॉसिबल थिंग इज देयर. इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कॉलेज में, हम उसे किस तरह यूटिलाइज करते हैं. क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है. बहुत बार ना ऐसी चीज होती है, सर हमें पता ही नहीं था कि ये हम भी कर सकते हैं. तो वो ना क्लासरूम में बैठ के या मोबाइल के अंदर पूरा जिसका ध्यान होता है ना, कंसंट्रेशन प्रॉपर होता है मोबाइल में, उनको नहीं पता चलता. क्योंकि हम पोस्टर्स लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, बट मोबाइल में बच्चे देखते देखते बाद में निकल जाते हैं. बराबर ना? पेरेंट्स में लग रही. तो हमने सब बताया रहता है, बट किसी को पता चला तो इसने ध्यान दिया, जिसने ध्यान ही नहीं दिया वो. पहले हम लोग जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे, जब हम आपकी उम्र के थे बच्चों के, तो ना हम लोग, हमारा फेवरेट पास टाइम होता था वो स्टेशन पे एड्स देखना. दीवारों पे लगे रहते थे रास्ते में.
आजकल कोई नहीं देखता है, एड्स के सब पैसे वसूल वेस्ट है, क्योंकि ट्रेन में जो भी होता है हर कोई मोबाइल पे ही होता है, बराबर कि नहीं? तो आप कितना भी एड लगाओ, पोस्टर लगाओ, कुछ भी लगाओ, स्टेशन पे कोई देखने वाला नहीं। कॉलेज में ऐसा मत करो। कॉलेज में आई विल एक्सपेक्ट एटलीस्ट इस कॉलेज फैकल्टी जो भी कभी भी चलता होगा और किसी ने मोबाइल में देखा, मोबाइल में देखते हुए चलते हुए ना, तो हम लोग रोकते हैं, बाबा मोबाइल अंदर एवरी इतना खर्चा किया है, एवरी एस्पेक्ट। जैसे आपने देखा बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें आप लोगों को नोटिस में आई, ऑल ऑफ दैट इज आपके इंटरेस्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, हर किसी सब कुछ हो तो अपॉर्चुनिटीज हर किसी ने मेकिंग द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। किसी ने PS5 देखा होगा, किसी ने क्रिएट होगा, किसी ने अपॉर्चुनिटीज आर देयर, हर किसी सब कुछ हो तो अपॉर्चुनिटीज हर किसी ने बेस्ट ऑफ किसी ने PS5 देखा होगा, किसी ने क्रिएट होगा, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, हर किसी सब कुछ हो तो अपॉर्चुनिटीज सब कुछ हो तो अपॉर्चुनिटीज
ऐसा कोई भारी भरकम कुछ लगने वाला नहीं है. Okay, all everything available in the college, but of course, basic laptop is advisable because you all are IT students. Laptop, desktop, that is okay. मतलब वो इतना उसमें ये नहीं. But Windows machines are required so that you can do basic programming, basic research, studies, all of that. All our notes, everything will be digitized, will be available to you because आजकल हमने handbooks, printed notes दिया करते थे, but कोविड के बाद कोई पढ़ता ही नहीं है. Everybody studies from the screen. Therefore, we've completely digitized all our notes and all our material, which will be given to you. इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को समझता नहीं कि पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है. Okay, so now you all are grown-ups. You are responsible for your education. मम्मी पापा को अब मत परेशान करो, आपकी जिम्मेदारी है. बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज सिर्फ मैं बता दूंगा, बिकॉज किसी ने नहीं पूछा. कितने मार्क्स हैं हर पेपर में? याद है? कितने मार्क्स का पेपर है? 25, 50, 75, 100, 150? All of the above? None of them? CET questions? Okay, so generally, please remember, passing marks is 40%. Okay, you have to score total जो भी हो, 100 हो या 150 हो. Some papers will be 100, some papers total will be 150. Passing is 40%. Okay, is passing aggregate. That means internals and final exam मिला के. अब होगा क्या? Internals में अच्छे marks लाओगे तो final exam इजी हो जाएगा. टेंशन कम होता है ना, तो अपना पेपर इजी जाता है. जो लोग इंटरनल्स में कम लाएंगे उनके लिए फाइनल एग्जाम अपने आप डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बेसिक मैथमेटिक्स है. 40% टोटल लाने हैं, या तो इंटरनल्स में अच्छे ले आओ तो फाइनल एग्जाम में कम मार्क्स में भी पास हो जाओगे. अच्छे मार्क्स चाहिए तो फाइनल एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स लाना है. इंटरनल्स में कम लाए तो फिर ऐसा होगा, सर मैं आया ही नहीं कॉलेज, आया ही नहीं ना, तो कभी पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके इंटरनल में 0 हो जाएंगे. फाइनल एग्जाम में 80-90% लाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है. सो इफ यू कम एवरी डे, डू योर टास्क, होमवर्क, व्हाटएवर असाइनमेंट, सबमिशंस एट टाइम, पासिंग बिकम्स इजी. वी कॉल इट फेस्टिवल ऑफ एग्जामिनेशन इन विद्यालंकार. एग्जाम फीवर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ फेस्टिवल ऑफ एग्जामिनेशन. यू शुड बी हैप्पी कि आज मैं आया हूं, अब मुझे एग्जाम देनी है, आई विल स्कोर अ गुड ग्रेड, एंड दैट इज आवर आइडिया. इज इट ओके? अभी किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है कि मैं जाऊं? क्योंकि आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ है. यू हैव टू सी द कैंपस. ओके, थोड़ा सा खान पान भी रखा है छोटा सा, तो वो भी करना है, लिए बिना मत जाइएगा. सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई विल हैंड इट ओवर बैक टू कंचन मैम. Okay, so you all are requested to scan this QR code and fill the feedback form. Parents are also requested to submit the feedback form which was given during the registration. Volunteers can collect the feedback form from the parents. While you all are sharing your valuable feedback, as we have come to the end of the session, I would like to conclude it with a vote of thanks. Every journey begins with a single step, and today we didn't just gather here for the orientation, we witnessed the opening of countless new stories.
On behalf of VSIT, I extend gratitude to all the parents and students who chose to spend this important day with us. They call me master, but I don't go faster.
right now, baby. Morning. Take no time, I'm here. Fully like a loaded, how we make the crowd chill. Big wish, baby. कोई ना जाने कितों आया है तू सबके दिलों विच होगी कुकुरुकू कोई ना जाने कितों आया है तू सबके दिलों विच होगी कुकुरुकू ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ அரங்கம் அதிரட்டுமே விசில் பறக்கட்டுமே கரங்களும் சரட்டுமே தேகோ அழுத்து மொத்தமே ஒம்மேல எலசகருக்கும் தங்களுக்கும் பொருத்தமலுக்கும் பாவர்களுக்கும் குமரிகளுக்கும் லோசே கானா ஹே ஜீனா ஹே ஜீனா ஹே ஓலா ஓலா dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. Think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਢੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Get ready? I'm a king, but I bop with my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud when they made their heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.
बोले तो कान खोल के सुन। नहीं करने का लफड़ा नहीं करने का बच नहीं करने का लफड़ा नहीं करने का सुबह सुबह दूध में भजिया नहीं लगने का हटा सावन की घटा रे हटा सावन की घटा जरा चोपड़े का कैंडल जला चल हवा आने दे हवा आने दे। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਰਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, you know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਰਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। Everybody ready? Ready, ready. Beats ready, huh? Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4. तेरा प्यार
what we wanna go. होते होते मिलते हैं, मिल जाते हैं बहाने. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. जले देखा तुझे तो दिलों में जान आई. फोटो पे तराने जगे अरुमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई. छा गई फिर वही बेखुदी. छा गई फिर वही बेखुदी. ला 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 झूमेंगे नाचेंगे महफिल जमाएंगे दिन आज का है ये मस्ती भरा प्यारा. खुशी तो हल्ला मचाएंगे जलवे दिखाएंगे बस हम बना देंगे अब ये समा सारा. होश उड़ गया है जाने कैसा है नशा. अंग अंग तंग आज रंग ने दिशा. जोश है जवा जवा नजारा है जवा. हार हर बुरी खुशाल छिंगते हवा. Fight go, fight go, fight go, fight go,
हे हट जा, लाईव्ह चालू आहे. आ जाओ सिंगल आ जाओ ऑफिस को दिखाता हूँ लाइव में अभी काम कर सकते हो मजा कैमरा चालू है जा मेरे अन्य को भेज बोलते जा जो काम कर रहे हैं जा आया रुको हिलाओ मेरे कैमरा हिलाऊंगा तो हिलाओ अबे आएगा हाँ दिख गया तेरे को लिस्ट ले रहा क्या लाइव वगैरह देखने में एकतर आम्ही पण जाणार आता आपल्या लाईव्हचा आवाज नाही जा रहा है वो माइक
morning. Take no time, I'm here. Fully like a loaded, how we make the crowd chill. Big rich baby. कोई न जाने कित्थों आया है तू लगदे दिलों विच होगी कुकू कोई न जाने कित्थों आया है तू लगदे दिलों विच होगी कुकू ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ I dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos are hurt to rot, before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਲੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ बस 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 हाँ अरे वाट ना मी आता चालले लगेच येतो थांब पाठवतो आता ते ऑल इंडिया मला तिकडे बोलवलं म्हणून चालू तर कर वाट चालू कर कमी वाटला खूप कमी आहे
काम कर रहे हाँ बस जो काम को ना तो क्या वो बोल रहे इसको वॉलंटियर का ऑडिटोरियम में चलो कौन है पैरेंट आगे उसको कॉल पूछा इसलिए तो बहुत करायला पाहिजे दे दे हे द्या जा लेके जा बाहर लेके जा फोन को हे राहिलेले मागितले तुला आ जा दे क्या जा नीचे जा दे ये सिंगल है ना ये जा इधर तुला आता है ना उधर जो सिंगल सीट बाकी है ना उनको बिठा हां देखो उसको बिठा इसको जा इनको इधर खत्म कर A vibrant blend of talent, tradition, and timeless charm, where every corridor has a story. Welcome to the world VSIT. I'd like to show you just a place where we'll be spending most of the time towards your academic journey. Our classrooms aren't just typical four-wall lecture halls, but they are a strong support pillar towards connection, compassion, and comfort. One of the features students love the most about the classroom is the lecture recording system. All lectures are recorded automatically. Whether you miss a class or want to revise something, well, this is your place to go. We wanted to ensure that learning is accessible at any given moment of time. Another feature I would like to highlight in this classroom is the interactive smart board. If you want to present an idea or share something to the class, this is your space to go. We want technology to empower your learning and not restrict it. Welcome to the Vidyalankar, one of the most exciting spaces on campus. If you're into podcasts, filmmaking, editing, or just want to explore your creative side, this is where the action is. We've got all the gear, from professional cameras and lights to high-tech computers and even green screen. And the best part, you don't just learn here, you create. Trust me, I've been part of it. From music and open mics to fests and spontaneous performances, something is always happening here. This is our amphitheater. If you're looking for a campus that lets you express, this is the place to be. Welcome to the space where science meets body and every for waiting to be discovered. So whether you're chasing deadlines or finding your next favorite novel, this will be your go-to. Our libraries, our homes, our houses, included international research journals and magazines. If you know exactly where, this is the space to level up your intellect. And even if you can't find your perfect pick on the shelf, our digital archives, along with our librarians, shall bring it to your fingertips. हाँ ना मेरा जाओ
and memories are made. Welcome to one of the most iconic spaces on our campus, the auditorium. With a spacious seating capacity of over 250, every event here feels personal yet powerful. And welcome to the most popular hangout and refreshment spaces on our campus. The place that fuels us through lectures and assignments. The college canteen. Whether it's a quick snack or a full meal, our canteen has it all. Whether it's a hot coffee on a busy morning or a chill cafe, this cafe for those who enjoy a calm cafe vibe, our CCD offers the perfect setting. Welcome back to the campus tour. But this next stop is not your average classroom or library. This is where the real fun begins. This is the students' den, a space designed for pure relaxation, recreation and creativity right in the heart of our campus. Mind if I join us all around? Have fun. There is something for everyone. You can test your aim at carom or your skill at table tennis. Either way, this place is alive with movement. And when the mind wants a complete escape, Good afternoon, everyone. Before we officially begin today's orientation program, I request your kind cooperation with a few simple instructions that will help us conduct this session smoothly and ensure that everyone has a comfortable and enriching experience. Kindly switch off your mobile phones or keep them on silent phone so that the proceedings remains uninterrupted. We request everyone to remain seated throughout the program and avoid unnecessary movements inside the auditorium. We encourage you to listen attentively, make notes if required, and feel free to reach to us. On behalf of Vidyalankar School of Information Technology, I, Sanjila Sagar, your mentor, program coordinator for VSIT AIML, and your mentor throughout the journey, would like to extend a warm welcome to all the parents and students for the orientation program of first year bachelor's program in data science and computer science, AI and ML. It's wonderful to see so many bright, excited faces ready to begin this new chapter. The objective of this orientation is not merely to introduce to a college, but to welcome you into a community. By the end of this session, you will gain an understanding of Vidyalankar's values and academic culture, become familiar with the Department of Community and the opportunity it offers, learn about the facilities, support systems, extracurricular activities, and student development initiatives available on campus. Meet the leadership and faculty members who will guide you throughout your academic journey. Begin your transition from school to college with confidence, clarity, and enthusiasm.
Dear students, today marks the first page of a new chapter. Every friendship you build, every idea you share, every project you undertake, and every challenge you overcome will contribute to the story you write here. So sit back and stay curious and allow yourself to experience the beginning of what we hope will be one of the most memorable journeys of your lives. स्कूल से कॉलेज तक का सफर सिर्फ यूनिफॉर्म बदलने का नाम नहीं होता, ये सपनों को पहचान कर उन्हें सच करने की शुरुआत होती है. Congratulations on becoming a part of Vidyalankar family. With that, let us begin the orientation program for the first year bachelor's program in Data Science and Computer Science, AI and ML, academic year 26-27. Knowledge is sacred, and seeking the blessings of Goddess Saraswati can enhance one's understanding and application of knowledge. We shall now invoke the blessings of Goddess Saraswati, the Goddess of wisdom and knowledge, on this auspicious occasion. I request everyone to rise for the Saraswati Vandana. Introducing you to the Vidyalankar family, an institution that has been shaping young minds for over 6 decades through a commitment to quality education and value-based learning. Vidyalankar is a trusted name in education, offering diverse programs across engineering, science, commerce, management, arts, and polytechnic. Under its umbrella are Vidyalankar Institute of Technology, Vidyalankar School of Information Technology, Vidyalankar Polytechnic, and Vidyalankar School of Business. Students can pursue undergraduate programs such as VSIT, VSc Data Science, VSc Computer Science in AI/ML, BMS, BFM, BFA, BBI, PAF, BBA, BBM, along with postgraduate programs including MSc in IT, Data Science and AI, Cyber Security, MCOM, and PhD in Business Economics. Vidyalankar School of Information Technology, established in 2002, is a premium institution affiliated with University of Mumbai. The institution has been re-accredited with an A grade by NAC, reflecting its commitment to academic excellence, innovation, and quality education. As an autonomous institution, VSIT enjoys the flexibility to design industry-relevant syllabus while maintaining high academic standards. The institution focuses not only on imparting knowledge, but also on developing responsible professionals who are intellectually capable and ethically grounded, truly embodying the motto, provoked by intellect, propelled by values. Parents, you should be assured that your children are part of an institution committed to quality education. VSIT offers a wide range of undergraduate programs designed to prepare students for emerging careers and higher education. The programs indicate theoretical knowledge with practical exposure through projects, internships, workshops, industry interactions, and research opportunities. Students are encouraged to develop analytical thinking, communication skills, leadership qualities, and technological competence throughout their academic journey.
The syllabus is regularly updated to align with industry requirements and the national education policy, ensuring that graduates are equipped with the skills needed in a rapidly evolving professional landscape. Whether students aspire to pursue higher studies, entrepreneurship, or successful careers in industry, VSIT provides the academic foundations, resources, and mentorship needed to help them achieve their goals and emerge as competent, confident, and socially responsible professionals. It is my honor to introduce our respected and esteemed leader of our institution, our principal ma'am, Dr. Rohini Kelkar, a gold medalist from University of Mumbai. She holds a PhD in economics from the prestigious Indian Institute of Technology, Bombay, and brings with her a wealth of academic expertise and administrative experience. Under her visionary leadership, Vidyalankar has continued to uphold its commitment to academic excellence and holistic student development. I now invite Principal Ma'am to address the gathering. अरे हो गया नमस्कार सगळ्यांचं इथे विद्यालंकार कॅम्पसवर स्वागत. I'm very happy to see the students as well as their parents. तो डिलीट कर पूरा आज सुबह से ये हमारा सेकंड सेशन है जो आज लिखा और 4 ऐसे सेशंस होने वाले हैं. और ये जो ओरिएंटेशन का जो दिन होता है वो हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बैच, नया बैच कॉलेज में ज्वाइन होने वाला है. विद्यालंकार फैमिली में पागल है तू उनका आगमन होने वाला है. मत कर फिर मत रिकॉर्ड. So we are really we always wait. For me this is perhaps the best day of my professional life, where I see so many enthusiastic students and their parents eager to send their son or daughter to the college. So सबसे पहले मैं सब पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने आपके बेटा या बेटी के लिए हमारा कॉलेज चूज किया है. आपने एक अच्छा काम किया है हमारा कॉलेज चूज करके, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है कि जो बच्चों के दिमाग में था कि VSIT ज्वाइन करना है या डेटा साइंस या AI ML का कोर्स लेना है, इसके लिए जो दिमाग में आइडियाज है, our responsibility is to complete that or to help the students to achieve their objectives. कॉलेज में क्या क्या होने वाला है, ये प्रोग्राम दोनों जो प्रोग्राम्स है डेटा साइंस और AI ML, किस तरह से उनका सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इवैल्यूएशन पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे बताई जाएगी. मैं बेसिकली यहाँ पे हूँ कि आज ये दिन ऐसा होता है कि पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे पेरेंट्स आए. जनरली 99% टाइम्स पेरेंट्स यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज एंजॉय करने के लिए आते हैं, न कि उनके बच्चे की कंप्लेंट सुनने आते हैं. क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ यू कि ऑल ऑफ देम नाउ have become 18 years or soon they will become 18 years old, they will become voters now and they know their responsibilities. और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलाना ये पेरेंट्स का काम है और उन्होंने वो किया है आपके लिए. अभी यहाँ पे जो भी कुछ अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज है, वो लेके आगे जाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ना आपके पेरेंट्स की. They have their own daily work to do. Talking about Vidyalankar as an institution, अभी आपको बोला गया है कि ये जो कैंपस है यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, हमारा VSIT है. Around 7,500 students are there on the campus. हर तरह के कोर्सेज यहाँ पे दिए जाते हैं. And in spite of all that,
I don't want to ask questions on the very first day, but I feel that as soon as you enter the campus, what first thing comes in your mind is a very clean and green campus. तो इतने 7,500 बच्चे डेली यहाँ पे आते हैं और फिर भी ये कैंपस बहुत अच्छा है। तो आपके जो सीनियर्स हैं, they are maintaining this campus well. कितने भी हाउसकीपिंग स्टाफ हो, कितने भी क्लीनिंग स्टाफ हो, but unless we keep it clean and green, it will not remain like this. And I'm very happy, particularly parents को मैं बताना चाहूँगी कि आप किसी भी समय क्लासरूम में जाइए, क्लासरूम हमारे एकदम अच्छे होते हैं, क्लीन होते हैं, क्योंकि आसपास सब क्लीनलीनेस देख के बच्चे खुद समझ जाते हैं कि अगर कुछ फेंकना है तो जाके डस्टबिन में फेंक। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये जो फॉलोइंग ऑफ रूल्स है, वो हम विद्यालंकार में हमारे बच्चों में इनकलकेट करना हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। ये जो बैच है 26-27, ये बैच स्पेशल बैच है हमारे लिए, इसलिए कि आपने अभी देखा होगा कि VSIT स्टार्टेड इन 2002 and 26-27 is VSIT's 25th year. So हम अभी एक अच्छे पैमाने पे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करने वाले हैं। रादर ये पूरा साल हमारा सिल्वर जुबली ईयर होने वाला है। We started in July 2002. So July 2002 से जुलाई 2027 ये जो हमारा पूरा 25 ईयर का जर्नी होने वाला है, ये ईयर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। You are going to be a part of that. So I am really very happy to welcome you all to this 25th year of celebration for VSIT. आपकी बैच और एक स्पेशल बैच है। अभी अपने यहाँ पे नीला मैडम ने कहा कि our college is autonomous college. Some of you may know what is autonomy, some of you may not know. Autonomy का मतलब ये है कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ये पूरे एकेडमिक्स की एपेक्स बॉडी है, इंडियन एजुकेशन की एपेक्स बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशंस सब ठीक से कर रहे हैं, उनकी मतलब काफी साल से उनका सब एजुकेशन अच्छे से चल रहा है, एंड दोज हु अप्लाई उनको वो ऑटोनॉमी देते हैं। काफी कॉलेजेस हैं आसपास, विद्यालंकर इज नॉट द ओनली कॉलेज व्हिच इज ऑटोनॉमस, बट विद्या, पोदार, ये सब कॉलेजेस भी आजकल ऑटोनॉमस है। वैसे ही हमारा भी कॉलेज, ये अपना VSIT भी ऑटोनॉमस है। इसका मतलब ये है कि हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। आपकी डिग्री में भी मुंबई यूनिवर्सिटी डिग्री, ओनली थिंग इज जो सिलेबस है वो फ्रेम करने की जिम्मेदारी अभी हम पे दी गई है। सो our college can frame our own syllabus within the rules and regulations of the University of Mumbai. इसका फायदा ये है कि सिलेबस अपग्रेडेशन बहुत फास्ट हो जाता है। काफी बार पेरेंट्स को पता होगा, हम बोलते हैं कि जो पढ़ाते हैं यहाँ पे कॉलेज में और जब जॉब पे जाते हैं वहाँ पे जो होता है उसमें बहुत अंतर है। जो पढ़ाते हैं वो वहाँ पे यूजफुली नहीं होता है कभी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉलेजेस को दी जाती है अंडर ऑटोनॉमी कि नाउ यू डिवाइज योर ओन सिलेबस सो दैट यू कैन मेक सिलेबस वेरी क्लोज टू व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स। पिछले 6 महीने से हमारा एफर्ट चालू है। हमारे टीचर्स, HODs with the external experts in required field in their departments हमने बुलाए यहाँ पे और हमने एक सिलेबस फ्रेम किया। That syllabus has to be sent to the university, get an approval from that syllabus, and वो सब करके अभी ये पहली बैच है फर्स्ट ईयर की जहाँ पे ये नया सिलेबस फॉलो होगा। और ये सिलेबस हमने बहुत ज़्यादा ग्रेड करके करंट रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करने की कोशिश की है। So from that point of view also this batch is the first batch who going to have this syllabus along with them. First year, second year, third year जैसे आप प्रोग्रेस हो जाओगे उस तरह से ये नया सिलेबस आपके पास रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली फॉर द पेरेंट्स बताना चाहूँगी कि करंटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में
something called as National Education Policy. ये नाम आपने भी सुना होगा, पेपर में, न्यूज़पेपर में हर जगह आता है, या आपके बच्चों ने भी बताया होगा, जूनियर कॉलेज में भी उनको बोला होगा. All of us are working under National Education Policy, NEP 2020. 2020 में ये पॉलिसी पब्लिश हुई थी. So there are many changes which are introduced under this policy. Now what are the changes that are applicable to us here? हमारे बच्चों को इसका फायदा क्या है? NEP 2020 का एक बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे ना बच्चों के ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम करने की कोशिश की गई है. वो इस तरह से की गई है कि उनका जो फाइनल एग्जाम होगा, पहले हमारे ज़माने में तो एक 100 मार्क का एग्जाम होता था साल में एक बार, एंड वो साल में एक बार एग्जाम होता था. साल भर क्या कुछ भी आप करो, वो एग्जाम ठीक से दो, अच्छे मार्क्स लेके आओ. या फिर अगर उस एग्जाम के टाइम पे कुछ हो गया, बीमार हो गए, वो हो गए, तो हर कायम परमानेंटली हमारे मार्कशीट पे आएगा कि मार्क्स कम मिले 10वीं में या 12वीं में. और हमेशा फिर मैं बताऊंगी 12वीं में इसमें मार्क्स कम मिले बिकॉज आई हैड फीवर, आई कुड नॉट स्टडी. तो वो एक दिन अगर मैं बीमार हूँ या कुछ तो हो गया, तो मेरा पूरा जिंदगी भर मेरी मार्कशीट वो दिखाएगी. स्लोली एंड स्टेडली वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. और अभी जो बताया, अभी जो ये सिस्टम है, वहाँ पे डिटेल में ऑफकोर्स आपको बाद में बताया जाएगा कि थोड़ा सा साल भर उनको पढ़ाई है, और साल भर जो करते हैं उसके क्रेडिट्स, उसके मार्क्स उनको मिल जाएंगे, ना कि जस्ट फाइनल एग्जाम. सो इसमें जिम्मेदारी भी है, फायदा भी है, और आई डोंट नो, आई वुडंट कॉल इट एज अ टोटा, बट है, वो भी चीज़ है, पॉजिटिव और नेगेटिव. फायदा ये है कि आप साल भर अच्छे से काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे मार्क्स ले आओगे. और इतना अच्छा कॉलेज है, आए हो आप, अभी क्लासरूम्स वगैरह देखोगे, इतने अच्छे क्लासरूम्स हैं, और क्लासरूम में आप अगर नहीं आते तो यू मिस समथिंग, एंड दैट विल बी आल्सो रिफ्लेक्टेड इन योर मार्क्स. तो बेसिकली पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि उनको रोज के रोज कॉलेज पे आना है, लेक्चर अटेंड करना है, उसका उनको फायदा होने वाला है. There are some subjects like sports, cultural activities, dance, drama, ये भी पेपर्स अभी है अंडर NEP 2020. और ये जो एक्टिविटीज बच्चे करेंगे वो भी उनके मार्कशीट में जाएगा, उसके मार्क्स, उसके क्रेडिट्स भी उनके मार्कशीट में जाएंगे. तो NEP ने थोड़ा ऐसा किया है कि डाइवर्सिफाइड, मतलब अभी ये बच्चे डेटा साइंस और AI ML के हैं, तो उनके कोर सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इन एडिशन टू दैट थोड़ा डाइवर्सिफाइड, किसी को ये इंटरेस्ट है, किसी को वो इंटरेस्ट है, लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की गई है. So they will learn either Hindi, Marathi or English. We also want to start, if somebody is interested, if we have a group of students who are interested in learning basic Sanskrit, we also want to introduce that. तो अगर बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमको ये भी सीखना है थोड़ा बहुत, तो वो भी सुविधा अभी NEP के अंदर दी गई है कि अगर आप वो करते हैं तो आपके उसके मार्क्स, क्रेडिट्स आपके मार्कशीट में आ जाएंगे. नेशन फर्स्ट, ये विद्यालंकार का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है. नेशन हमारा सबसे पहले होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, और मेरा फायदा, मेरा एजुकेशन, ये सब इसके नीचे. नेशन के लिए हमको काम करना है. We started this feeling amongst the students by doing one or two major things. जो I don't think in many colleges we do have that. For example, 11 बजे every day at 11 o'clock we have national anthem all throughout the campus. National anthem public होता है. स्कूल में हमने देखा होगा, कॉलेजेस में थोड़ा रेयर है. तो हम जहाँ पे भी है, रास्ते में चल रहे हैं, गेट से अंदर आ रहे हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, जहाँ भी है, everybody has to stand and respect the national anthem. उसी तरह शाम को 5 बजे वंदे मातरम बजता है. और इतना ही नहीं, ये जो सब किया है ना, वो हमारे कॉलेज के टीचर्स ने ही वो सब टेक्निकल भी उन्होंने ही किया. So उसके ऊपर जो काम करना है, जो माइक से whatever technical requirement is developed by our own teachers. ये भी सब चीजें जो आप देख रहे हो टेक्निकल, रिमोट से अपना ये दिया जाता है.
ये सब हमारे तीनों कॉलेजेस के टीचर्स ने किया हुआ है और बच्चों के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं. वी मेन आवर फोकस इज दे शुड वर्क, स्टूडेंट शुड वर्क इन लैब्स, स्टूडेंट शुड क्रिएट समथिंग, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, कुछ प्रोटोटाइप्स बनाएंगे. और ये अपना सेशन होने के बाद जब वापस कॉलेज में अपने VSIT के वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे हम लोगों ने कैसे थोड़ा एग्जीबिशन किया हुआ है. ये एग्जीबिशन ऐसा है कि जो हमारे आप लोगों के सीनियर बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उनके प्रोजेक्ट्स, उन्होंने जो कमाए हुए प्राइजेस, ट्रॉफीज़, टीचर्स ने भी जो भी कुछ उनके अचीवमेंट्स है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्प्ले पे रखी है. इसलिए कि पर्टिकुलरली बिकॉज पेरेंट्स आर कमिंग, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या ये बच्चे लोग कर सकते हैं. वी ऑलवेज फील that once the students get their undergraduate degree, they have 3 options before them. 1, they can take a job. 2, they can go for higher education. And 3, they can become entrepreneur. अपना खुद का जॉब स्टार्टअप शुरू करेंगे. ये 3 ऑप्शंस है बच्चों के ऊपर, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट ईयर से लेके कि जिसका जो भी अच्छा लगता है कि किसी को जॉब चाहिए, किसी को स्टार्टअप शुरू करना है या हायर एजुकेशन करना है, वी विल टेक देयर ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्रेन देम इन दैट. कि हायर एजुकेशन करना है तो हमको लगता है कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन में उनको उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए. प्लेसमेंट है, ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जॉब दें. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, तो उस तरह से वो वाला जो ग्रुप है वो स्टार्टअप के लिए उनको हम लोग डेवलप करेंगे. तो ये हमारा मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पेरेंट्स का ये होगा कि आइदर ऑफ दीज में आपका बच्चा, लड़का या मतलब बेटा या बेटी जाए, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हेल्प इनटू दैट. तो ये सब कुछ ये सी चीज़ें यहाँ पे है. डिसिप्लिन ऑब्वियसली इज आवर मेन, वी एक्सपेक्ट द डिसिप्लिन. We also expect that everybody comes well in time in the class. Attendance भी है, ज़रूरी है attendance करना. तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे, in addition to that whatever extracurricular activities are there, if you wish you can participate in any of those activities. अभी आपके टीचर्स आपको एक बड़ा अच्छे से बता देंगे कि क्या क्या यहाँ पे है. And I'm sure you will enjoy 3 years on this campus. If anybody wants to go for higher education, we also have higher educational availability of different programs for higher education, PG programs. और भी कहीं जाना है वो भी आप कर सकते हो. तो once again I thank the parents for selecting my college VSIT for your son or daughter. आप यहाँ आते रहिए. ये लोग आपको बता देंगे, टीचर्स लोग, कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे है, क्या है. ये जो हमारा ऑडिटोरियम है, काफ़ी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज जॉइन एज पर योर कन्वीनियंस, योर लाइकिंग, एंड वी विल हैव अ रैपो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू ऑल. थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कॉलेज फ्रॉम मंडे, जिसका आपको अभी बताया जाएगा कि क्या होने वाला है मंडे से. तो छुट्टियों का थोड़ा सा नाउ यू मस्ट बी वांटिंग टू कम एंड स्टार्ट द कॉलेज, करेक्ट? पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं, बच्चे नहीं. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. I hope now all the students will come from Monday. A great institution is built not only with classrooms but with experiences. Because college is not just classrooms and attendance sheets, it's the labs where ideas become innovations, the library where dreams quietly take shape, the seminar halls where confidence is built, and the corridors where friendships begin. और सच में कहूँ तो कॉलेज की असली यादें सिर्फ लेक्चर्स से नहीं बनती, ये हर उस जगह से बनती है जहाँ आप सीखते हैं, हंसते हैं, गिरते हैं और फिर और मजबूत होकर उठते हैं. We take great pride in the robust infrastructure on campus,
that made the academic life of a student exciting and enriching. Our campus features spacious, well-ventilated classrooms equipped with modern teaching aids that make learning interactive and engaging. Well-equipped computer labs provide students with access to the latest software and technologies, enabling them to gain practical exposure alongside theoretical knowledge. These labs are not just rooms filled with computers, they are innovation spaces. This is where you will write your first programs, debug code after endless attempts, train machine learning models, build projects, participate in hackathons, and perhaps even develop solutions that can impact society. Beyond academics, the campus offers seminar halls, collaborative learning spaces, and recreational areas that encourage creativity, teamwork, and innovation. Every facility has been thoughtfully designed to create an environment where students can learn, explore, and grow with confidence. The campus is fully ICT enabled, providing students with access to smart classrooms, high-speed internet connectivity, and digital learning platforms. Our live lecture capture system allows students to revisit classroom sessions whenever needed, making learning more flexible and accessible. Students also have access to digital notes, online study resources, e-books, academic portals, and learning management systems that support continuous learning beyond classroom regular class hours. This seamless integration of technology ensures that every student remains connected, informed, and prepared for the digital future. At VSIT, we believe that student success is built on a foundation of academic support, personal well-being, and a nurturing campus environment. Students have access to dedicated reading rooms and collaborative spaces where they can study individually or work together on projects. Comfortable, common areas provide opportunities to relax, interact, and build lasting friendships. The institution also offers counseling and mental health support, recognizing that emotional well-being is just as important as academic achievement. Medical assistance is readily available for emergencies, while faculty mentors and administrative staff are always available, approachable to guide students through their academic journey. Our goal is to ensure that every student feels supported, valued, and empowered to make the most of their college experience both inside and outside the classroom. The college supports your aspirations. सपने बड़े देखिए क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं और इन सपनों को पंख देने के लिए अब देखते हैं कौन सी फैसिलिटीज कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है थ्रू अ वीडियो. Vidyalankar School of Information Technology offers a well-equipped and thoughtfully designed academic environment. The campus features modern, air-conditioned classrooms and advanced computer laboratories that support practical learning. A dedicated media lab studio with professional camera and lighting facilities enables hands-on creative experience. Students have access to a range of sports facilities, including cricket nets, a football ground, along with a gaming zone for recreation. The campus also includes a spacious canteen and a well-maintained library with a quiet reading room for focused study. Cultural events and student committees contribute to an active and engaging campus life. The institution maintains collaborations with various companies, supporting student placement opportunities across different sectors. VSIT provides an environment that supports learning, development, and professional growth. Dear students, you have chosen one of the most exciting fields of this generation. Artificial intelligence, data science, and machine learning are shaping industries and transforming the future. You are not merely learning technology, आप future build करने वाले हैं. So to provide deeper insights into your program, I now invite Ms. Prachi Mahajan,
Program Coordinator, BSc Data Science, to present the Department of Computing. Yeah, thank you, Sanchila ma'am. A very good afternoon to one and all. On behalf of VSIT and the Department of Computing, I, Prachi Mahajan, Program Coordinator for BSc Data Science, would like to congratulate and welcome all the students and parents who have assembled here today for the first year orientation program. Helen Hayes rightly said that the expert in anything was once a beginner, and today, this day, you begin your academic journey with us at the Department of Computing, VSIT. This journey is going to be full of learning, discovery, and growth. I can assure you that. Okay. Let us understand a little more about our department. The department was established in the year 2002. At that time, we launched our UG program of BSc IT with an intake of 60 seats. Gradually over the years, the intake has increased to 300 seats. Then in 2021, we launched the BSc Data Science program with an intake of 60 seats. And this year, in 2026, we have launched 2 more UG programs, that is BSc Computer Science AI/ML and BSc Computer Science Software Engineering, each with an intake of 60. We also have postgraduate programs running under this department. In 2007, we launched the MSc in Information Technology with an intake of 20, which has gradually increased to 60. And this year, we have started 2 new programs, Masters in Data Science and AI, which is a natural progression for our BSc Data Science students. This has an intake of 20 seats, and the MSc in Computer Science Cybersecurity, once again with an intake of 20. Behind every successful student stands a team of mentors who constantly guides, inspires, and motivates them. Let me introduce you to one such team who stands strong not only when you are here but even later. We have Dr. Asif Rampurawala, Vice Principal and Head of the Department of Computing. We have Dr. Umesh Koende, Chief Academic Officer. Myself, Prachi Mahajan, Program Coordinator for Data Science. Sanchila Sagar, Program Coordinator for CS AI/ML. Then we have your class teachers. First year BSc Data Science, the class teacher is Priya Ramchandran. And for first year BSc CS AI/ML, your class teacher is Lakshmikant Manchekar. Let us understand a little more about these programs. Both the programs of BSc Data Science and BSc CS AI/ML, okay, follow the semester pattern, which means that in every academic year, you will have 2 semesters. Every semester will be of 14 weeks long. And every week, you will have a mixture of lectures and practicals. Your lecture will be of 1 hour duration, and the practical sessions will be of 2 hours durations. Coming to the evaluation, how you will be assessed. There will be some subjects, I'll be showing you later, there will be some subjects which will be very core or very focused on your domain, the domain that you have chosen, that is data science or AI/ML, and then there will be some other subjects. So the core subjects will be of a total of 150 marks, whereas the other subjects could be of 100 marks. Let us talk about the subjects which are of 150 marks. They are divided into 2 components. There is one theory component and there is another practical component. Okay, the theory component is going to be of 100 marks. The practical component will be of 50 marks. Let us now focus on the theory component. Here, within those 100 marks, you will be evaluated on the basis of 2 criteria. One will be the continuous internal assessment, which is going to be of 50 marks, and there will be an end semester examination, which will be of the remaining 50 marks. Okay. Now, what is this continuous internal assessment? This is all the activities that are undertaken during the course of the semester, okay, because we believe in continuous improvement and not just on one single evaluation, okay. So, as part of the continuous internal assessment for theory, you will have one mid-term examination, which is conducted sometime during the middle of the semester. This has around 20 marks. Then there will be a variety of quizzes, poster presentations or projects or some written assignments that will be given to you by your teachers in the subject. They will be totaling to 25 marks.
Now these 25 marks actually indicate how much you will score in each of those assessments. Whereas being present for these assessments in the class will help you get those 5 marks which are reserved for the attendance. Okay, so if I want to really score well in my internals, then I need to be present in the class and do these assessments well. Let us come to the practical portion. In this, once again, we have 2 criteria on the basis of which you will be assessed. One is the continuous internal assessment carrying 25 marks, and then there will be the end semester examination carrying the remaining 25 marks. As part of the internal assessment, you will be doing one mini project in a subject which has 20 marks. Moreover, every week you will be coming to the labs to perform one practical, one or sometimes one or more than one practical. So the performance of the practical, getting the desired output, doing it sincerely will finally help you achieve the 5 marks of the attendance reserved in the practicals. Okay. So this was the bifurcation of the total 150 marks that you have per subject. Now for passing you require 40% of marks, which is combined passing, which is mentioned there. So the passing scheme is a combined passing, matlab together from your internals and end semester examination, collectively you have to get a passing score of 40%, which isn't difficult to achieve. But we are not here just to pass, right? Okay, we want to get good grades. Then in that case, we have to make sure that we score well in our internal assessments as well as in the end semester examinations. Okay, to just summarize this, there will be 50% weightage for the internal marks. So out of 150, 75 marks will be for internals, theory and practical together. And there will be the remaining 75 marks which will be for the end semester examination of theory and practical. This slide is very important. Okay. So let us come to the subjects which will be taught to you and in which you will be assessed. So for BSc Data Science, Semester 1 subjects based on the National Education Policy of 2020 are listed here. You can see that they are grouped in various, under various headings. Okay. So we have certain major courses like Introduction to Programming and Probability and Statistics. Then we have a vocational skill course which is Database Management Systems. Then we have communication skills in English as an ability enhancement course. And then there will be a mix of interdisciplinary subjects like fundamentals of accounting, Indian knowledge system and such. Together, these amount to 22 credits in your semester. Okay. So let us now have a look at who is going to teach you these subjects. I request the concerned teachers to come on stage. For Introduction to Programming, we have Dr. Leena Jadhav, who has a teaching experience of 18 years. Then we have Priya Ramchandran, your class teacher for data science. She is a master's in statistics with a teaching experience of 3 years. And then myself, I'll be teaching you database management systems. I have a teaching experience of 15 years and an industry experience of 10 years. Yeah. Thank you so much. Let us move on and understand the subjects for BSc CS AI ML. So the semester 1 subjects once again are grouped under various headings. So you have Introduction to Programming in Discrete Mathematics. Then you have Electronics for Computing, Communication Skills in English, and then a mix of subjects like Entrepreneurship Skills, Management Skills, Indian Knowledge System and such, once again totaling to 22 credits. I would now request the teachers teaching these subjects to come on stage. For Introduction to Programming, we have Sanjila Sagar ma'am, with a teaching experience of 26 years. Then we have Rahul Sonar with an experience of 9 years who will be teaching you discrete mathematics. And for Electronics for Computing, we have Lakshmikant Manchekar, who is also your class teacher with a vast experience of 16 years. Thank you so much. Every class has a mix of students. There are always some students who perform excellently, are overachievers, some who consistently get decent grades, whereas there are some who struggle a bit or need some help, additional help in certain subjects. Therefore, the Department of Computing runs the Integrated Education and Development Program, under which
We give additional learning resources, thought-provoking and challenging problems and assignments to those overachievers to help them delve deeper into the subject. Whereas for those who may be struggling a bit or need some additional hand-holding, we conduct separate one-on-one problem-solving sessions as well as mentoring. Let me now take you through the various resources that are provided by the Department of Computing to take learning beyond the classroom. The department has associated itself with various professional bodies such as ICT Academy, CII, IEEE, Computer Society of India, to name a few, through which students can listen to global leaders, they can visit industries, take up certification programs, participate in symposiums, participate in hackathons, as well as be interns. The department has collaborated with various learning platforms such as AWS Academy, Oracle Academy, Microsoft Learn, GitHub, to name a few, through which you can take up various certifications that are offered. See, the idea here is to help you strengthen your CV. Classroom teaching will always happen, classroom learning will also happen from your side, but that is not just enough. We need to be employable. We need to be industry ready. So the whole idea here is to give you exactly that. In every subject, we invite eminent resource persons from the industry for various curriculum enrichment activities such as guest lectures, hands-on workshops. So these experts typically tell you what is trending right now in the industry, what are the tools and techniques that are used right now in the industry with which you should be familiar. Now for the students in data science who probably are from the commerce background, we will be conducting bridge courses in mathematics to bring you at par with the level of mathematics that the science students have. Okay? The detailed schedule of this will be released later. I just showed you the various professional bodies and the learning platforms we have collaborated with. Additionally, we also collaborate with certain organizations and institutes such as NASSCOM, BNP Paribas, Symbiosis, IBM, to name a few. And we conduct add-on courses for students which range from 30 hours onwards. Okay. So once again, here we are trying to give you a variety of courses. You can choose whichever you want. Whatever is your liking, you can choose up that course and ensure that you are slowly paving your path to become an expert in the domain of your choice. Understanding and learning concepts in classroom is fine, but when we really see them being applied in the industry, it's an altogether different experience. So the department undertakes industrial visits. Students and faculty members have been to Flipkart, Mahindra Finance, All India Radio, National Stock Exchange, as you can see here. Additionally, the department always gives a platform to its students to create, innovate, and showcase their skills. So we have certain technical events like NextEdge, which is a national level conclave. Then we have Tantra Vihar. So all the mini projects, all the final year projects that you do, you can actually exhibit them in this project exhibition. Then we have internal Smart India Hackathon, where students consistently have been working on various problem statements given by the SIH, as well as they have been creating their own problem statements. And we have actually one accolades here. I'll be showing you that soon. We also have our annual TechFest, TechFesta. All those who were here initially, you must have seen it through the video. There were a variety of technical events that we had in this TechFesta. And lastly, to help you test your own programming skills, we have Codathon, the Code Wars. That was mainly about academics, right? Okay. But we also believe in the holistic development of students. So we have a lot of student clubs which will give you an opportunity to discover your potential, build some leadership skills, have good networking with your peers from other departments as well. So this is a list of the student clubs, and as a program coordinator for data science, I'm proud to say that many of my students right from first year have been members of these clubs, and they are doing extremely well. They have even won awards. I mean, the thing is that they join a club which is floated by the Department of Commerce, and the student of data science actually wins in the competition by that club. So that's really a proud moment for us. The department consistently takes efforts to bridge the gap between academia and industry. And
the teachers in the department, teachers feel very proud when they see their students doing absolutely well, not just in academics but in other activities also. So let us have a look at the achievements of our students. This is Ojaswini Nair, who has been a topper in BSc Data Science. She is from the batch of 2023 to 2026. And then we have Kaikasha Muhammad Nazre Alam, who has been a university topper consistently in BSc Data Science in SEM 5 and SEM 6. She is from the batch of 2022 to 2025. Our students have been all India winners at the Smart India Hackathon, which I mentioned some time back, and I'm proud to say here that they won a cash prize of 1.5 lakhs. That's a great achievement. Our students have been doing exceptionally well at the Avishkar Research Convention. They have won a bronze medal at the state level and a silver medal at the university level. Additionally, while participating in these various technothons and then hackathons, datathons, our students have got best college awards and trophies and cash prizes as well. These are glimpses of the best college awards that our college has got through the participation of our students in extracurricular activities such as cultural activities, singing, dancing and such. The true measure of a department's success lies in the accomplishments of its alumni. So here are few of our distinguished alumni. As you can see, we have Yash Kadakia, who is the founder and CEO of Shadowmap and a member of NASCOM. Prachi Pisad, she is a leading Marathi actress. We have Naveen Reddy, who is a YouTuber with a following of more than 2 million. And we have Aniket Singh, which is the Assistant Vice President at Marsh and McLennan Company. I'm sure each one of you will be doing well, you know, studying hard, getting good grades, okay. Finally, at the end of 3 years, probably you would be wondering, you know, will I be getting a good job? So we have a dedicated placement cell at VSIT who strives hard to get companies like Capgemini, TCS, Infosys on the campus for recruitment. We train you to give a good interview, to participate well and, you know, do well in group discussions. So the placement committee will be releasing the pre-placement activities as soon as you complete your 2nd year. Moving on, to give you a glimpse of how the semester is going to be like, okay, when your exams will be, when your lectures will commence, okay. So we have an academic calendar for the first semester here for your reference. Today we have already told you a little about the college, a little about the Department of Computing. But there is a lot more to share, there is a lot more that we want you to experience, and therefore in the next week we have planned an induction program for you. That is what it mentions here. The third line says the FY induction program. So as such, your lectures will start from the coming Monday, 15th of June, but the first week we have dedicated to this induction program. Okay, so each of those subjects will actually start a week later, but I don't want any one of you to miss this induction program. It will really help you connect with your classmates and with the department and the teachers therein. So let us have a look at the induction schedule. For the data science students, the classroom is M409. This building is called as the M block. So in this building itself, on the 4th floor, you have a dedicated classroom to yourself, which is 409. So we will be having some sessions in the classroom and a few others in the lab to help you experience our extraordinary labs as well. The sessions will start at 12:30, so you are expected to be in the classroom at least 15 minutes prior. Okay. We will be sharing these schedules in your WhatsApp group as well. For the CS AI ML students, this is your induction schedule. Your classroom is M410. Okay, once again in the same building. Your sessions too start at 12:30, and the last session, you know, typically thoda bore ho jata hai na, so the last session has been planned in the labs. I would now request our Vice Principal and Head of the Department, Dr. Asif Rampurawala, to explain a few of our other associations. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Afternoon ही है, night नहीं हो गई है. All right. There has been a lot of information which has been driven towards you. Hopefully, everybody has picked up whatever they wanted to hear. है ना?
हम उतना ही रजिस्टर करते हैं जितना हमें चाहिए. सो पेरेंट्स ने प्लेसमेंट कंपनीज देखी होंगी, बच्चों ने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देखी होंगी. पेरेंट्स को पूछूंगा कंपनीज का नाम तो बता देंगे. स्टूडेंट्स विल टेल ओनली अबाउट कि PS5 है कि नहीं है, पूल टेबल है या यस. ऑलराइट, ठीक है. All of that is part of growing up now. So at VSIT there are a lot of opportunities available, and you all are both the data science program and now the AI/ML program. Both are flagship programs. Okay, the highest in demand right now. Okay, तो वेटिंग लिस्ट मेरी बहुत लंबी चल रही है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को सीट मिल गई. अभी लोग लाइन लगा के खड़े हैं मेरे पास. अभी भी मुझे बिफोर आई केम आई हैड अ कॉल फ्रॉम अनदर कॉलेज, यू नो, उनके वाइस प्रिंसिपल का कॉल था, उनके किसी रिश्तेदार के, ऑल ऑफ दैट. एंड आई सेड डेटा साइंस का तो ओरिएंटेशन चालू हो रहा है मेरा, तो अभी डेटा साइंस और AI/ML में सीट मिलना तो मुश्किल है. बट ऑल ऑफ दिस इज, you know, useless if you don't take the advantage of the opportunities which are available while you are studying for 3 years. तो 3 साल में बहुत सारी चीज़ें होंगी. Okay, there are lots of clubs, lots of activities, hackathons, datathons, you know, competitions, co-curricular activities, value-added courses, certificates, you know, certifications, trainings, placement drives, बहुत कुछ होगा. सब कुछ आज पता नहीं चल सकता. इट इज पार्ट ऑफ एज यू ग्रो अप. बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम उस आर वी रिसेप्टिव टू दोज थिंग्स, कि हो चीज़ें हो रही हैं और हमें पता ही नहीं कि हो रहा है. ओके, तो मैंने पिछले सेशन में भी ये डायलॉग बोला था कि आजकल क्या होता है कि हम लोग, इफ़ यू गो अराउंड, व्हेन वी टेक द टूर आफ्टर दिस, विल बी गोइंग अराउंड द टूर, यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन आवर डिजिटल साइनेजेस. आजकल हमारा वो नोटिस बोर्ड कम हो गया ना, नोटिस बोर्ड कोई देखता नहीं है, तो हमने भी स्क्रीन्स लगा दी हैं ताकि लोग देखें. बट मेनी ऑफ द टाइम्स आई फाइंड समटाइम्स, यू नो, स्टूडेंट्स आर लुकिंग इन देयर मोबाइल एंड वॉकिंग पास द स्क्रीन, पता ही नहीं कि स्क्रीन पे क्या लिखा है. सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कम, लाइक जैसे इंडस्ट्रियल विजिट्स जाएंगे हम लोग, अलग अलग कंपनीज लेके जाते हैं. कंपनीज कम, गेस्ट लेक्चर्स हैपन, एंटरप्रेन्योर्स कम, मेनी थिंग्स हैपन. बट अगर हमने पता ही नहीं, हमें ध्यान ही नहीं है, हम खाली कॉलेज, पेरेंट्स विल अग्री विथ मी ना, घर में भी किचन में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, मोबाइल में ही ध्यान है, क्या चल रहा है पता नहीं. सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अनलेस वी ग्रैब देम, दे आर गॉन. एंड फिर बाद में 3 साल के बाद मुझे बोल के फायदा नहीं कि सर आपने तो ओरिएंटेशन के दिन पे सबने खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, अब क्या. मैं पूरा हिस्ट्री निकाल सकता हूँ, बिकॉज आपके आजकल व्हाट्सएप ग्रुप के होने की वजह से क्या ना अच्छा होता है कि देख कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज गई थी, आपने कितनी उसमें से ली. नहीं सर वो ना गांव जाना था, नहीं सर वो ना उस वक्त ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया. ये सब मुझे भी पता है और आपको भी पता है. क्या है, क्या है मतलब एक यू नो, माय मेंटोर यूज्ड टू ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल. अगर 2 मिनट में लूंगा. He used to narrate this story on the orientation day, okay, and I'll take his copyrighted story and give it to you. एक बच्चा ना 12th स्टैंडर्ड में होता है ना, अभी आप लोग 12th स्टैंडर्ड में थे पिछले साल तक, तो आपका स्टेटस था VIP. घर में ना हर चीज में आपका इंपॉर्टेंस ज्यादा था. एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू यू, यस और नो. इसका एग्जाम, इसका टेस्ट, इसका ये, उसका CT, इसका ये, everything was according to you. So at that time, now, whenever you come from, you know, class or whatever, when you come home, मम्मी कैसा गया, सब कुछ ठीक था, खाने पीने को रेडी, सब कुछ. तो एक स्टूडेंट आता है अपने घर पे अपने मम्मी को, मम्मी आते को दरवाजा खोलते हैं, मम्मी को बोलते कैसा गया, सब कुछ ओके हो रहा है, हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग गोइंग वेल. बोले पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, बोले सब अच्छा चल रहा है, बट क्या ना वो जो क्लास में जो इंटीग्रेशन पढ़ाते ना प्रोफेसर, वो जरा बराबर नहीं है. अच्छा अरे नहीं फिक्र मत कर, मैं तेरे आई गेट यू सम नोट्स, आई गेट यू समथिंग, तू जा जब तू पढ़ाई कर बराबर से, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है. वो जाके अंदर बेडरूम में अपने स्टडी रूम में बैठ जाता है. उसके बाद थोड़ी देर में ना मम्मी का रिश्तेदार आती है या कोई बाजू वाला कोई आता है और वो भी पूछते हैं ना VIP का स्टेटस हमेशा सबको पता रहना, अरे कैसा चल रहा है उसका 12th स्टैंडर्ड,
अरे नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अभी आज बता रहा था कि ना इंटीग्रेशन के प्रोफेसर बराबर नहीं है. अब ना इसमें होता क्या पता है, जो स्टूडेंट अंदर बैठा है ना वो सुन रहा होता है, उसको पता है मम्मी कन्विंस हो गई है कि प्रॉब्लम इंटीग्रेशन पढ़ाने वाले प्रोफेसर में, मेरे में नहीं है. ओके, अब ये बच्चा जिंदगी में कभी इंटीग्रेशन नहीं सीख सकता. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज मम्मी इज कन्विंस ना, मम्मी को समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन पढ़ाने का प्रॉब्लम किसका है, प्रोफेसर का, मेरे बेटे का नहीं है. ओके, so now that son will never understand integration in his life. अब इस स्टोरी में से जो जिसको जो लेना है वो ले लो. ओके, इसके आगे मैं नहीं जाएगा. आजकल पता नहीं किसी के ऊपर कुछ भी केस वेस बन जाता है. So इसलिए we will stop there. But that's the idea. So opportunities are there and everything has to be taken the way it is supposed to be done. At Vidyalankar, out of so many wonderful opportunities, one of the opportunities which we have is the Vidyalankar Institute for International Education. Okay, so what happened was all our trustees, जो है ना हमारे जो trustees हैं, they are all educated abroad, and they came back to India, and took Vidyalankar from a classes to a 11-acre campus and one of the premier institutions in Mumbai. And when they came back, they had this idea that foreign education has its advantages. Indian education has its own advantages. What if we can, have the best of both worlds? अगर हम दोनों का फायदा उठा सके तो 2002 में जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, आज 25वां बैच, 25th year, we are enrolling our 25th batch. But 20 years ago, okay, after we started the college 5 years back, 2006 में we collaborated with our very first foreign collaboration with a university called Penn State University in the US. Okay, and this is now running for 20 years, and over the 20 years we've added many universities. You can see some of them here. Some of these are the top 100, top 50, top 200 universities in the world. मतलब अलग-अलग bands में हैं. None of the colleges which you were aspiring for, at even suppose in the 10th standard में किसी को पूछा ना कि कहाँ पे जाना है, कोई बोलेगा मुझे IIT इसमें जाना है, किसी को इसमें. None of those institutions ranked higher than these. Okay, what we did was we tied up with these universities, creating pathway programs. So now these universities are across the globe. They are in various countries: US, Australia, New Zealand, Canada. Okay, and these opportunities are available to our VSIT students. Okay, NEP आपने सुना होगा बीच-बीच में थोड़ा सा ऐसा. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक एडवांटेज ये है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट. दैट मीन्स यू कैन हैव pathways like this where after 2 years, for example, you can transfer to another university, okay, where you have a pathway, and you can transfer your credits to those universities and get a degree from these universities. Okay, this is an opportunity. Again, as I said, हर कोई वही चीज पिकअप करेगा जो जिसको इंटरेस्ट का होगा. Not everybody might be interested in everything, so it's okay. Therefore, I will not bore you with too much details and all the things and everything, but these opportunities are available. So over the last 20 years, thousands of students have gone through our program. In these very halls, I have done orientations for many, many years. Okay, but some of them, and a good number of them, have actually taken this opportunity and gone abroad to get an undergraduate degree. और बाहर जाके उन्होंने डिग्री ली है, एंड उसका एडवांटेज क्या होता है, दैट दे आर एबल टू वर्क इन दोज कंट्रीज फॉर 3 years विद दोज डिग्रीज, एंड दे आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. पैसा लगता है ना, डॉलर्स में जाता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए. यू नीड टू रिकवर दैट बैक. सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट एंड देन वर्क इन सम ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड. And almost every top company today has a Vidyalankar student in there, and many of them are VII students. Okay, so at that I'll keep VI over there and just tell you that this opportunity is available. Those who are interested should then go to the classroom, which is Y002. After this orientation, after everything, थोड़ा सा हमने snacks रखा है, वो snacks रख लेके आप उधर जा सकते हो. Y002 is the room next to जहाँ पे आपने फीस भरा.
जहाँ पे आपने एडमिशन किया ना, फीस भरा, उसके बाजू का क्लासरूम है, वहाँ पे हमने काउंसलर्स बैठाए हैं. दे विल गाइड यू, दे विल गिव यू मोर डिटेल्स पता करने का, गाइडेंस करने का कोई पैसा नहीं लगता है. सो अपॉर्चुनिटी है, जिसको पता करना है अबाउट मोर अबाउट इट, यू कैन गो एंड फाइंड आउट इफ इट इज़ गुड, इफ इट इज़ वर्थ परस्यूइंग, इफ इट इज़ नॉट वर्थ परस्यूइंग, आपका इंटरेस्ट है नहीं है, वो आप देख सकते हो. ऑल ऑफ दैट इज अप टू यू. बट बाद में ये पता नहीं होना चाहिए कि अरे ये पता ही नहीं था हमको कि ये भी पॉसिबिलिटी है. तो ये कोई नहीं बोलेगा मुझे 3 साल के बाद, प्लीज डे 1 पे बता दिया था मैंने. अब याद रखना नहीं रखना वो बात की बात है. आज का रिकॉर्डिंग हुआ है, लाइव यूट्यूब पे है, मैं बाद में प्ले करके दिखाएगा तुमको कि देखो मैंने तो आके बता के गया था. करेक्ट? ऑलराइट. सो अब without for VI, but in general, because I'm also happen to be the head of the department in which you all have taken the admission, and also sometimes I wear the hat of the vice principal. Look, sometimes is wrong word, but I have to wear it all the time. But so if you have any doubts, any questions regarding VSIT, regarding your program, regarding ये teachers ने जो बताया वो सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में होगा क्या, whatever, any question if you have. नहीं तो फिर मैं पूछेगा, मैं प्रोफेसर है, मैं टाइम दिया तुम पूछो, नहीं तो मैं पूछता है नहीं तो मैं पूछेगा. AIML कौन से क्लासरूम में होगा मंडे को लेक्चर? M किधर है? इसी बिल्डिंग में 4th फ्लोर. ओके. डेटा साइंस कौन से क्लासरूम में? M410 409. अच्छा, नहीं तो दोनों साथ में बैठने वाले हो गए. अच्छा, नहीं अलग अलग क्लासरूम है दोनों के लिए. बाजू का एक क्लासरूम है 409, अगेन ऑब्वियसली इन द सेम बिल्डिंग. ओके, ऑन द 4th फ्लोर. कितने बजे आने का है? 12:30. मतलब आप लेट हो गए, क्योंकि 12:30 को सब एक साथ आओगे लिफ्ट में. मेरे पास 4 लिफ्ट है, बट सबको एक साथ नहीं लेके जा सकता ऊपर. सो इफ यू आर ऑन द टाइम, यू आर लेट. इफ यू आर बिफोर टाइम, देन यू आर ऑन टाइम. समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ओके. पास होने के लिए क्या लगेगा? 40%. परफेक्ट. सिस्टम अलग है बेटा. अभी तक जो भी कर रहे थे ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिसाइड, योर मार्क्स, योर ग्रेड्स आर नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड इन 3 hours. अभी तक आपने हर एग्जाम जो अभी दिया ना 12 मेक और ब्रेक था, वो T20 था. अभी T20 खत्म हो गया. अभी 3 साल का टेस्ट मैच है. डिफिकल्ट होता है टेस्ट मैच. T20 इन कंपैरिजन आसान होता है, मजा आता है. लास्ट बॉल पे छक्का मारा, जीत गए. इधर लास्ट बॉल पे छक्का नहीं मार सकते. हर सेमेस्टर में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट अ CGPA. CGPA इज योर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट. क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट मतलब सेम 1 2 3 4 5 6 का टोटल क्यूमुलेशन होता है. ऐसा नहीं कि TY में आके सर लास्ट एग्जाम देंगे अच्छे से, गए डूब गए, कोई कंपनी खड़ा ही नहीं रखेगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एवरी सेमेस्टर काउंट. हर पेपर, वेदर इट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, whether it is environment studies, whether it is sports, हर एक का इंपॉर्टेंस उतना ही है, इक्वल वेटेज है. ऐसा नहीं है वो स्कूल में होता था ना ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, हाँ गए तो गए, नहीं गए नहीं गए, ये वैसा नहीं है. इट इज पार्ट ऑफ योर ग्रेड पॉइंट. ओके, याद रखना. ओके, हाउ मच पास होने के लिए यू हैव इंटरनल्स एंड फाइनल एग्जाम. इंटरनल्स पूरे सेमेस्टर में होगा, बराबर है. अगर इंटरनल्स में अच्छा स्कोर किया तो फाइनल एग्जाम इजी है. क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव पासिंग है. क्यूमुलेटिव पासिंग समझते हो? दोनों मिला के पास हो गए. तो अच्छा स्कोर करना है तो दोनों में अच्छा स्कोर करना है. इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स लाओगे, फाइनल एग्जाम में प्रेशर कम हो जाता है तो अच्छे मार्क्स आता है. इंटरनल्स में नहीं आए, एब्सेंट हो गए, ध्यान नहीं दिया, अरे छोड़ो ना क्या फर्क पड़ता है, बंक किया, ऑल दैट मार्क्स गए, फिर फाइनल एग्जाम में भर भर के मार्क्स लाने पड़ेंगे. डिफिकल्ट हो जाता है ना वो. फाइनल एग्जाम में फिर स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, तो फाइनल एग्जाम इजी करना है मतलब रेगुलर वर्क करो. जो असाइनमेंट, सबमिशन, जो भी काम टास्क दिया है वो टाइम टू टाइम करो. एकदम लाइफ आसान है.
टेस्ट मैच है, हर बॉल को बराबर से खेलना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस और नो? एनी डाउट्स अगेन? नो? नहीं तो मैं तो चलते रह सकता है, बट ठीक है। पेरेंट्स को किसी को कुछ पूछना है? लैपटॉप खरीद के देना पड़ेगा क्या बच्चों को? ऐसा होगा ना? घर में चालू हो गया क्या ऑलरेडी? कि खरीद लिए ऑलरेडी? खरीद के दे दिए? वेरी गुड। अच्छा, मेरा काम खाली इतना बताने का है कि मैकबुक वैकबुक कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने दिया है तो वेरी गुड, आपकी मर्जी आपको। बट हम कोई 2-2.5 लाख का लैपटॉप नहीं मंगवाते बच्चों से। बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कॉलेज में काफ़ी कंप्यूटर्स है, दे कैन स्टडी, दे कैन वर्क ओवर हियर। Okay, we don't force or we don't pressurize or we don't push anybody to buy any high-end laptops or anything. Basic Windows laptop is enough, or a computer, जो भी है, laptop, computer, anything is fine at home, because घर पे practice करना possible होना चाहिए. Okay, उसमें वो क्या कर रहे हैं वो ध्यान हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे वाईफाई को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है। घर के वाईफाई आप संभालो, करेक्ट? तो इसलिए वो बच्चे इधर तो ज़्यादा नहीं करेंगे। काम करना होता है तो बराबर से इधर करते हैं बैठ के, क्योंकि टीचर्स हैं मदद करने के लिए सब कुछ। ओके, मस्ती करना होता है तो घर पे करते हैं। एनीवेज, ऑलराइट, सो विद दैट आई विल हैंड इट ओवर बैक टू संजीला मैम। ओके, एंड होपफुली आई विल सी यू अराउंड लेटर। बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much, sir. I hope now the entire curriculum, how it is going to happen, is very, very clear to all of you. At VSIT, we believe in walking this journey together. We value your feedback because it helps us improve continuously. Kindly take a few moments to share your thoughts with us. Your suggestions matter. Requesting students to scan the QR code and fill the feedback form, and parents are requested to fill the feedback form given at the time of registration. It gives me great pleasure to render the vote of thanks on this occasion on behalf of VSIT. I extend my heartfelt thanks to all the parents and students for gracing the occasion and making it a memorable one. A big thank you to all the staff members involved in this event's success. Today you entered this hall as newcomers. You leave as members of the Vidyalankar family. There will be assignments, there will be deadlines, there will be examinations, but there will also be friendships, laughter, achievements, and unforgettable memories. Always remember, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Dream big, work hard, stay humble, and make these years truly extraordinary. In today's digital world, staying connecting is essential. Please scan the QR code and become part of the VSIT online community. Follow all our official social media pages and join the VSIT WhatsApp channel today for the latest updates, announcements, and campus highlights. क्योंकि आजकल नोटिस बोर्ड से पहले नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, so stay informed, stay connected, stay updated.
Now I request everyone to rise for the national anthem. data science students come and parents be seated there. BSc data science students, please come. The data science students can exit from behind. Refreshments have been arranged, as well as the faculty members will take you on a college tour. Parents can also accompany, that's for the data science students.
Welcome to VSIT everyone.
morning. Take no time, I'm here. Fully like a loaded, how we make the crowd chill. Big rich baby. कोई ना जाने कित्थों आया है तू सबदे दिलों विच होगी कुकू कोई ना जाने कित्थों आया है तू सबदे दिलों विच होगी कुकू ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਓ ਮਾਈ அரங்க மதிரட்டுமே விசில் பறக்கட்டுமே கரங்கள் ஒசரட்டுமே தேகோ அழுத்து மொத்தமே ஒம்மேல எலசகரக்கும் தங்கலக்கும் மருதுமலக்கும் பாமரக்கும் பவரிகளுக்கும் லோசே கானா ஹே ஜீனா ஹே ஜீனா ஹே ஓலா ஓலா லா 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 I dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. Okay, okay. Crazy guys. Okay. Think I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the ride, before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Get ready? I'm a king, but I bop from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they made their heads ring. Father, forgive me, I can forgive them. We know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.
बोले तो कान खोल के सुन और राहे अपन बोले तो कान खोल के सुन नहीं करने का लफड़ा नहीं करने का मच नहीं करने का लफड़ा नहीं करने का सुबह सुबह दूध में भजिया नहीं लगने का हटा सावन की घटा रे हटा सावन की घटा जरा थोपड़े खा कैंडल जला चल हवा आने दे हवा आने दे. Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Get ready. I'm a king, but I bob to my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Everybody ready? ready Beats ready, huh? Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.
When everybody knows where we wanna go. होते होते मिलते हैं, मिल जाते हैं बहाने. You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Disco Divane. सितारे जले देखा तुझे तो दिलों में जान आई. फोटो पे तराने जगे और दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई. छा गई फिर वही बेखुदी. छा गई फिर वही बेखुदी. ला 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 ला. ये झूमेंगे नाचेंगे महफिल जमाएंगे दिन आज का है ये मस्ती भरा प्यारा. बड़ा खुशी तो हल्ला मचाएंगे जलवे दिखाएंगे बस हम बना देंगे अब ये समा सारा. बड़ा खुशी तो होश उड़ गया है गाने का सा है नशा. अंग अंग दंग आज रंग ने दिशा. जोश है जवा जवा नजारा है जवा. हर पूरी खुशाल झिंगते हवा. खोल दो लहरा दो लहरा दो. सरकशी का परचम लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो लहरा दो.别墅里面唱 K， 水池里面游龙鱼。我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字帅：大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，翻来翻在办公室，哎，大展宏图，员工都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为当老，他说要玩就要玩得大，玩得大点。谁穿越大老甩坐得下，养下宠物，得罪小人没关系，得罪君主看不起。世上君子不贪杯，得得罪得到。对，黑灰蓝白刀亦有道。Welcome to this great event on the campus today. और आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है. ये दिन है एनर्जी, एंटरटेनमेंट और एंडलेस एक्साइटमेंट. We are honored to host a distinguished lineup of speakers, each a leader, a thinker, and a powerhouse in their field. Biggest industrialists in India, particularly the ones in Mumbai, they have access to all your data. तिला एक माध्यम असतं आणि ते पूर्णत्वाकडे कसं जाईल ह्याचं आपण बघत. The max you can get your comic published is through Comic Cons, participating in Comic Con, and getting your work out there. So they have their own story, they have the first-hand original information, they are journalists. I would like to express our heartfelt gratitude to all our speakers for making Madhyam 2025 truly inspiring.
नमस्कार, मी अभिनेता सुनील गोडबोले. मी नाटकातनं वगैरे कामं करतो. ही जाहिरात बघितली आणि नोकरीसाठी धडपडण्याचे तुझे जुने दिवस आठवले. What does it mean to be an Indian? What does it mean to be a Hindu? What is dharma? मौज मस्ती का है ये समा, झूम उठा है ये सारा जहां, करता है तू क्यों कल की फिकर, सीख जीने का अपना ये ढंग। मौज मस्ती का है ये समा, झूम उठा है ये सारा जहां, करता है तू क्यों कल की फिकर, सीख जीने का अपना ये ढंग। सारे टेंशन को छोड़ दे, अंदर बात को तू तोड़, बाहर निकल के कोई टोक दे तो उसे रोक, बोल 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 बोल, आया रे आया, बिगर आया, आया रे आया, बिगर आया। एग्जाम्स का बुखार सर चढ़कर बोला, पढ़ 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 बेटा तू अभी पढ़ ले, सबमिशंस के भूत ने सबको डराया। मुझे अभी पता नहीं क्या मुझे है करना, पढ़ पढ़ के क्या मुझे है बनना, बचपन से चाहती गाने पे थिरकना, फिकर ने सिखाया अपनी चाह पूरी करना, विद्यालंकर की शान पर फिकर के नाम पर झूमो नाचो गाओ सारे आ जाओ ऑन द फ्लोर, जूनियर्स और सीनियर्स का मिलाप होता है जहाँ, अरे आपला काउंसिल कहलाता है वहाँ। आया रे आया, बिगर आया,
त्यासाठी सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका.
man. Take no time, I'm here. Fully like a loaded, how we make it cry chill. Big wrist, baby. ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ I died in an accident, cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock, before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. We pessimists, I ain't talk to them, plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance, I went to Jacob an hour after I got. Call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and I get the
must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos I heard the ride before Cam got the shit to pop. The doors is closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. Ready, ready.
Ready, ready. Base ready, huh? Mic testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Thank you so much for this response. It could be a little louder also. Thank you. Before we officially begin today's orientation program, I request kind cooperation with few simple instructions that will help us conduct this session smoothly and ensure that everyone has a comfortable and enriching experience. Kindly switch off your mobile phone. सबसे major distraction students वही होता है, तो हम उसको थोड़ा सा silent या फिर mute पे रखेंगे. This is very important. We request everyone to remain seated throughout the program and avoid unnecessary movement here and there. In case of any emergency or assistance, our students, volunteers are here and they are happy to help you. We encourage you to listen attentively, make notes if required, and feel free to reach to us for any query, any question. Now officially, Namaskar, very good afternoon everyone. On behalf of Vidyalankar School of Information Technology, I, Dr. Swagatika Nanda, would like to extend a warm welcome to all the parents and students for the orientation program of first year Bachelor of Commerce, Accounting and Finance, popularly known as BAF. It is wonderful to see you so many bright and excited faces ready to begin this academic journey with us.